Hello guys, what if I tell you that you will get more than double return on the amount or capital investment? I know, it seems very interesting and you are also quite shocked that how it will happen. But it's not a joke, it's completely true. It's 100% true. The profit margin will be double the amount of Capex plus Opex, that is capital expenditure and operational expenditure, which is more than double the amount we invested. So it's quite an interesting process. Let's understand this process with the extraction of butter and buttermilk from milk. दूध से मक्खन और जो जिसको छाछ बोलते हैं बटर मिल्क कैसे निकालना है। पहले आप दूध को धीमी आंच में पकाना है, ज़्यादा आंच में मत पकाइएगा, लेकिन क्योंकि उबाल के मतलब बाहर गिर जाएगा, फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा। फिर जब वो धीरे धीरे धीमी आंच में पकेगी तब उसमें कुछ बर्तन मतलब लिड कवर मत कीजिएगा, अदरवाइज वो एवापोरेट होके वाटर उसमें फिर से गिर के वो जो क्रीम का पतला सा लेयर जमा होगा वो उसमें टूट जाएगा और अच्छा मतलब मोटी मलाई नहीं जमेगी। तो आप उसको कवर मतलब मत ढकिएगा। अगर आपको मोटी मलाई जमानी हो तो जैसे बोली इसे धीमी आंच में पकाने के बाद एक जब पतला लेयर बनेगा तो आप गैस का फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और उसको ऐसे बाहर 1 घंटा ऐसे छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आप उसको फ्रीज में रख दीजिएगा और फ्रीज में लगभग रखने के बाद लगभग 3-4 घंटे के बाद आप देखिएगा वो जो पतली लेयर बनी थी वो पूरा एक मोटी रोटी के तरह एक लेयर और येलो कलर ये आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह बन जाएगा। तो आप वो निकाल के अलग से ऐसे जमा करते जाइएगा। और वो मलाई से मक्खन निकालने के लिए आपको आपका मतलब वेदर ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको जिसमें आप निकालेंगे ना वो मिक्सी जार या फिर ऐसे हाथ में वो फेंट के मतलब जो स्टरर में फेंट के तो उसको आप फ्रीज में रख दीजिएगा जैसे ठंडी जगह में। लेकिन अगर आपका जगह ज़्यादा ठंडी है लाइक कश्मीर मतलब ऐसे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है उस तरह अगर वेदर है आपका तो आप हल्का गुनगुना पानी से वो निकालिएगा। वरना मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो बेंगलोर का वेदर नॉर्मल है तो इसीलिए मैं पहले उस मिक्सी जार और ये स्पून ये सब को फ्रीज में रख दी थी। फिर ये आप देख सकते हो ऐसे जो मलाई को सब मलाई जो मतलब स्टोर करके रखे हुए थे हम लोग इसको हम एक मिक्सी जार में डाल के बस 2 मिनट्स ऐसे चला दिए और फिर ठंडा पानी डाल दिया और आप देख सकते हो ऊपर वाली लेयर मलाई का निकल गया है और नीचे वाली लेयर वो बटर मिल्क जिसको हम छाछ बोलते हैं वो निकल गया है। This is a half liter full cream milk which you can get from the dairy shop and it costs around 22 rupees. From this milk you will get 3 products, that is butter milk जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं और normal milk. And this is the 400 gram Amul butter which costs around 83 rupees. So from this half liter milk we are getting around 100 gram of butter as our final product for a single time. So if we assume that we are getting 100 gram of butter in a single time, then it costs around 21 rupees. And let's take buttermilk as of 10 rupees. And that the same amount of milk is also remaining. And buttermilk which is of 10 rupees. So calculating the sum of the total amount is coming as 53 rupees. So our initial investment is 22 rupees and our return is coming as 53 rupees, which is more than the double. So let's calculate our profit now, which is coming around 21 rupees plus 21 rupees, that is our butter, and 22 rupees, that is the same milk which is
also remaining, means the quantity is not reducing. 10 rupees is our charge. So totaling all these values, we are getting 21 rupees plus 22 rupees plus 10 rupees, that is 53 rupees. And here our initial investment is 22 rupees and our return is 53 rupees, which is more than double. Hi guys! Hope you like this video. And please like and share our videos if you like this. And please subscribe to the board engineers. And what about the bell icon? Yeah, press the bell icon. Yeah. And never miss any updates from the board engineers.